बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर सखी बादशाह। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में यूनिट 6 फ्लूइड डायनामिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 12। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो है बच्चे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग you drop two table tennis balls, one filled with air and the other with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? एक टॉल बिल्डिंग है, उससे आप लोगों ने दो टेनिस बॉल ड्रॉप किए। एक में आप लोगों ने हवा भरी है और दूसरे में बचे आप लोगों ने पानी। तो बताइए कि कौन सा पहले और क्यों टर्मिनल वेलोसिटी से पहले पहुंचेगा। यहाँ पे बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें तो वेट ऑफ द बॉडी अगर ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाए तो बॉडी कुछ वक्त के लिए रुक जाता है। हम कहते हैं कि इसकी एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम जानते हैं बच्चे, देखिए कि द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय mg डिवाइड बाय 6 पाई r ईटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव करता है कि फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैविंग सेम रेडियाई a heavier will have greater terminal velocity than a lighter object। तो हम लिख सकते हैं कि Vt is directly proportional to m। अगर हम r को क्या करें बच्चे, कांस्टेंट करें, अगर रेडियस हमारे पास सेम हो। ड्रैग फोर्स से हम ये भी जानते हैं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा Vt, मतलब ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Vt। Mass of air-filled golf ball is less than water-filled golf ball, so therefore it is safer. It is suffer smaller drag force and acquire terminal velocity sooner than water-filled golf ball. So the water-filled golf ball will reach the ground first. Question number 2 है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई कैन अ स्क्वेरल जम्प फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड while a human could break a bone in such a fall। देखो बच्चे, जब स्क्वेरल एक दरख्त से जंप लगाती है एक शाख से, तो जब वो ज़मीन पे आती है तो वो भागती है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इसी तरह एक आदमी जंप लगाए तो इसकी हड्डी वगैरह टूट जाती। क्यों? अब इसकी वजह यही है बच्चे कि अ स्क्वेरल जम्प्स फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड अनडैमेज्ड बिकॉज स्क्वेरल रीच द ग्राउंड विद अ लो टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस पॉइंट को बच्चे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लो टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, अ स्क्वेरल जम्प्स फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रिमेन अनडैमेज्ड। की वजह यही है कि the exposed surface area is very large as compared to the size of the object. Drag force that oppose the fall is high. This is because the drag force depends upon the size of the object. With an increase in surface area, the drag force also increases. Thus, drag forces that oppose the motion of a squirrel are very large. So, the squirrel reaches the ground with a safer terminal velocity and remains undamaged. On the other hand, the drag force acting on a human is less than the size of the human, and it reaches the ground with a greater terminal velocity and gets a damage. Question number 3. How does a terminal speed of a parachute before opening a parachute compare to the terminal speed afterward? Why is there a difference? The difference in the terminal speed of a parachute before opening and after opening
a parachute is due to the dramatic increase in the drag force. अब इसको हम इसे एक्सप्लेन करते हैं. देखिए ये हमारे पास इक्वेशंस है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 1/2 c rho av स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में c इज द ड्रैग कोएफिशिएंट, a is the area of the object facing the fluid, and rho is the density of fluid. Since the area of parachute exposed to air is small when parachute is closed, and the drag force is also small and its high terminal velocity. When the parachute is open, the drag force on the parachute becomes large due to greater surface area being exposed to air. Hence, the terminal velocity is a decrease. Question number 4 है कि you can squirt water over a greater distance by placing your thumb over the end of a garden house than by leaving it completely uncovered. Explain how this works. आगे हम देखिए मिसाल के तौर पर ये काम करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा. सो इसकी वजह यही है कि बाय प्लेसिंग थंब और देन over the end of a garden house, its area of cross-sectional decreases. As a result, the speed what increases. Mathematically हम लिख सकते हैं कि V is inversely proportional to the area. So from equation of continuity we have A1 V1 is equal to A2 V2. A area है, V क्या है, स्पीड है. तो हम लिख सकते हैं कि dV is equal to constant. तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि V is a inversely proportional to the area. अब देखिए बच्चे ये इक्वेशन शो करता है कि that area and speed are inversely proportional to each other. So therefore, by placing thumb over the end of a garden house, cross-section area of the hole decrease. As a result, the water from the pipe coming out with a greater speed and cover more distance is compared to the flow of water when the pipe is completely uncovered. Question number 5, which is a very very important question. ये question belong करता है डिब्रोगले, ये belong करता है बर्नौली इक्वेशन से. Question number 5 है बच्चे कि why does smoke rises faster in a chimney on a windy day? अब बर्नौली इक्वेशन में बेस करता है दो चीज़ों पे, प्रेशर और किस पे, स्पीड पे. बर्नौली इक्वेशन कि जहाँ पे प्रेशर कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, लेकिन बर्नौली जो प्रेशर के बारे में कह रहा था दैट इज़ व्हाट, स्टैटिक प्रेशर. तो देखो बच्चे स्मोक राइजेज इन अ चिमनी फास्टर व्हेन ब्रीज इज ब्लोइंग. इट इज़ अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल व्हेन प्रेशर इज़ लो द स्पीड इज़ हाई. सो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि P इज़ अ प्रोपोर्शनल टू 1/V. अब देखिए द स्मोक राइजेज in a chimney faster when breeze is blowing in the air. This can be explained by Bernoulli theorem such that P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. When breeze blow, the speed of air above the chimney is greater as compared to the ground, so therefore V2 is greater than V1. And according to this principle, the pressure is low where speed of the fluid is high. So P1 is greater than P2. Similarly, pressure is high where speed of fluid is low. So thus, in account of this pressure difference, the smoke rises in a chimney faster. इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से. ये भी बर्नौली इक्वेशंस पे है. देखिए बच्चे, two boats moving in a parallel paths close to one another risk colliding. Why? So reason है बच्चे कि the two boats moving in parallel path close to one another due to Bernoulli effect. Bernoulli है P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to
P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. So pressure is inversely proportional to the speed. So P is proportional to 1 by B inversely. हम लिख सकते हैं कि V1 is greater than V2, then P1 is less than P2. इसको हम explain करते हैं. देखिए बच्चे, assuming the two boats are shipped to be at a rest. If we think that water is flowing in the opposite direction with the speed of the ship, then the velocity of the ship relative to water will remain unchanged. So the direction of the relative velocity of water in the narrow strip between the two ships is evidently much greater than the velocity v dash of the vast expanse of water on the other side of the ship. Consequently, the pressure in the region between the two ships is, according to Bernoulli theorem, much less than the pressure on the other side of the ship. So this greater lateral pressure forces the ship to come close to each other. मतलब प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हमें ये दिखाई देता है कि वे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोलैप्स होंगे. इसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7. ये क्वेश्चन भी किस पे है, बर्नौलीज इक्वेशन पे है. अ क्रिकेट बॉल मूव्स फास्ट एन ऑब्जर्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन विल द बॉल टेंड टू डिफ्लेक्ट. वजह है कि the ball will deflect away from the observer according to Bernoulli theorem. वही इसमें भी उसूल है कि प्रेशर ज़्यादा करने से स्पीड कम होगा. तो according to Bernoulli effect, when velocity of the air increases, the pressure of the air will decreases. When the cricket ball spinning anti-clockwise from left to right, the velocity v2 of the air adjacent to the left side of the ball increases because the spin motion of the ball and velocity of the air are in the same direction, due to which pressure P2 on the way side decrease, but on near side of the ball, velocity of air decreases because the spin motion of the ball and velocity of air are in opposite direction, due to which pressure P on this side increases, P1 greater than P2. So this difference in pressure deflect the ball away from the observer. Question number 8. ये भी बहुत important है, बर्नौली पे है बच्चे. If aerofoil lifts the aeroplane in upright position, how do the pilot make the aeroplane fly upside down? देखिए बच्चे, not every aeroplane can fly upside down. However, इसके लिए हमारे पास जो ख़ास एरोप्लेन होते हैं, इसको हम कहते हैं एरोबेटिक एरोप्लेन, या जो आर्मी वाले यूज़ करते हैं. देखिए बच्चे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई अप्स एंड डाउन ड्यू टू हाई एंगल ऑफ अटैक. देखिए, when an aircraft rolls inverted, the pilot pitches the nose up to a greater angle than if right side up to maintain height. The greater angle of the attack increases the lift by facing the air flowing over the top of the wing to travel faster, even through its ups and downs. As a result, a net upthrust force is acting on the plane, which enable it to fly ups and down. Also, fighter aircraft have a more symmetrical wing than other aircraft. Question number 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि why do the golf ball have dimple? देखिए, अगर आप गोल्फ बॉल देखें तो इसमें क्या होते हैं, डिम्पल होते हैं, लेकिन स्मूथ बॉल में डिम्पल नहीं होते. वजह क्या है? देखिए, गोल्फ बॉल हैव डिम्पल due to it can travel far as compared to smooth surface ball. देखिए बच्चे, वजह यही है कि गोल्फ बॉल जो होता है have dimple so that can move up on the air very high and can travel larger distance. Consider two balls shown in the figure. अब देखिए, हम पहले आते हैं इस फिगर नंबर 1 की तरफ.
तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीमलाइन फ्लो देखें तो इसकी जो लेयर है वो पास स्मूथली विद अ ग्रेटर स्पीड। सो इसमें डिम्पल नहीं है, रिप्रेजेंट अ बॉल विदाउट डिम्पल। और अगर हम फिगर बी में देखें तो वहाँ पे उसमें क्या है, डिम्पल है। इन केस ऑफ बॉल without dimple, the ear passes smoothly with a greater speed, while in case of ball with a dimple, the ear bent more around the back side of ball turbulently. So due to dimple, in this way, a thin layer of ear clings to the surface of the ball, which reduces the drag force. Due to reduction of dragging force, the golf ball cannot be slowed down easily. As a result, the golf ball moves up in the air easily and travels longer distance as compared to a ball without dampers. इसके बाद बच्चे आखिरी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ बाय यूजिंग wind deflector on the top truck cabs reduce fuel consumption. देखिए बच्चे, अगर आपने ट्रक वगैरह देखे हैं तो उसका जो केब होता है, फ्रंट वाला हिस्सा, इसके ऊपर एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं विंड डिफ्लेक्टर। अब ये विंड डिफ्लेक्टर क्या करता है, ये ईयर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे गाड़ी को आगे चलने में आसानी होती है और उसका खर्चा बहुत कम होता है। तो देखो बच्चे, विंड डिफ्लेक्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन by giving streamline flow around the vehicle, truck, trailer, etc. देखिए, the trucks when moving at a higher speed experience greater air resistance, मतलब drag force, due to their large flat surface area. To overcome this air resistance, fuel consumption decreases because the truck will be doing greater work done against the air resistance. So therefore, many trucks are using wind deflector on the top of their cab to streamline the shape of the truck so that air simply slip over it. As a result of which the drag force reduce on the fast moving truck. This ultimately reduce the fuel consumption and the vehicle have long life. So thank you, students.